of chapter 1 which I had already taught you in my previous video. The food we eat. So today in this lesson we will learn about why there is a necessity of cooking food as well as the preservative methods. There are many types of preservative methods which we already do in our house to take our food in a neat way. So today I will explain you why there is a necessity of cooking food. बेटा here some food can be eaten raw, right? कुछ फूड हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ फूड बिना पकाए उसको हम लोग खा नहीं सकते. But before eating the raw fruits and vegetables, it is necessary to wash them properly to remove the germs present inside it. That's why before eating the raw fruits and vegetables, we should wash it, then we should eat it. Right? Same way, it is not necessary to eat some of the other fruits and vegetables without cooking food. For example, we cook cereals, pulses, vegetables before eating them. But we should also not overcook it, because by overcooking, some of the nutrients present in the food items get lost. So what is nutrients? We had already studied in my previous video, right? The nutrients are the substances which is obtained from the food we eat. Isn't it? Yes. So nutrients can be carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, etc. So while overcooking, mostly the vitamins which are water soluble get lost, and some of the minerals is also lost. That's why we should not overcook it. Also, before chopping the vegetables, that means before cutting the vegetables, we should wash it so that the soluble vitamins, water soluble vitamins will not be lost. So before chopping the vegetables, we should wash it, then we should chop it. Now, by cooking food, why it is necessity for cooking food? It is necessary to cook food because while cooking, most of the germs present in the food will spoil, and also it makes the food soft, tasty, and it is very easy to digest. For example, when you are eating any food items, for example, I am giving you soaked chana. राइट, जब हम लोग चना भिगा के खाते हैं तो कुछ लोगों को वो चना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, राइट. लेकिन वही चना, भिगा हुआ चना, जब हम लोग उसमें मसाला, ऑयल, एवरीथिंग अच्छे से डाल के जब उसको पका के खाते हैं तो इट इज़ वेरी टेस्टी, बिकॉज व्हाइल कुकिंग इट द फूड आइटम्स बिकम सॉफ्ट, इट इज इजी टू डाइजेस्ट, एंड द फूड इज वेरी वेरी टेस्टी. दैट्स व्हाई cooking food habits, we can say by cooking the food becomes very easy to digest and it is very much tasty. And one more example I will give you, that when we are soaking pulses or any type of cereals, the nutrients get lost in that water. So that while cooking we should use the same nutrients which is present in that water. Means we should use the same water in which the cereals were soaked. Now I will teach you the preserving methods, that is methods of preservation. My first method is refrigeration. What is refrigeration? In every house refrigerator is present. आज सबके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर. तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इवन वी कीप मिल्क, फिश, मीट एक्सेट्रा. Why? क्योंकि हम लोग उसमें कुछ दिनों के लिए फ्रेश रख सकते हैं, राइट. तो जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो ग्रो, वी कैन से जर्म्स ग्रो वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. दैट्स व्हाई वी शुड कीप ऑल दिस फ्रूट्स, vegetables in a cold places, and the temperature of the refrigerator is very low so that the germs cannot grow inside it, so that we can keep fruits, vegetables in refrigerator for several days. Isn't it? That means in refrigeration the temperature is very low so that the growth of
मतलब डीप फ्रीजिंग में आप लोगों ने फ्रीजर में भी देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक में बर्फ जमता है, राइट, दैट इज डीप फ्रीजिंग। व्हेन वी कीप फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिशेस in deep freezer, then the water inside the vegetable, fruits and fish get converted into ice, so that the food item which is kept in the freezer can be kept for several days. Also आप लोग ने देखा होगा मार्केट में मटर अवेलेबल है, राइट, वो मटर डीप फ्रीज करके रखा जाता है so that it can be used for longer times. We can keep it for several months. Now third example is drying. This is very oldest method. आप लोग ने गांव में भी देखा होगा, गांव में खेती होता है तो वहाँ पे आलू, गोभी ये सब हम ज़्यादा लगाते हैं। तो गांव के लोग क्या करते हैं, जो पोटैटो से उसको कट करके और सुखाने को रखते हैं। ड्राई मतलब सुखाना। क्यों सुखाते हैं? बिकॉज व्हाइल ड्राइंग द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट आइटम्स गेट एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू सनसेट so that it can be kept for longer time. Similarly, you can also see we can dry grapes, chilies and kept preserve it for a longer time. That is किशमिश। आप लोग ने रेसिन देखा होगा। देखिए मेरे पास कुछ रेसिन मैंने लाया है। This is the dried form of grapes and this is the method of drying. किशमिश को हम लोग जब सुखाते हैं, ग्रेप्स को सुखाते हैं तो ये किशमिश बनता है and it can be preserved for a longer time. Similarly, I have example of this red chilies. It is also example of drying. The green chilies are dried and it can be kept for a longer time. My next method is using preservatives. Right? Using preservatives. Example पहले मैं आप लोगों को बता रही, सबको जैम, सॉस, पिकल्स, मुरब्बा, जेली खाना बहुत पसंद है, राइट? यस। तो ये हम लोग कैसे बहुत दिन के लिए रख सकते हैं? बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स सच एज शुगर, सॉल्ट, ऑयल एक्सेट्रा, राइट? देखिए बेटा, घर में मम्मी अचार बनाती है, राइट? वो अचार हम लोग रोज तो बनाते नहीं है, एक दिन बना के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको हम लोग 1 साल 2 साल के लिए यूज करते हैं। तो जब हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग सॉल्ट और ऑयल यूज करते हैं, इजंट इट? तो ये इज सॉल्ट। सॉल्ट इज द प्रिजर्वेटिव एंड ऑयल इज आल्सो प्रिजर्वेटिव व्हिच इज यूज्ड इन पिकल टू स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? Similarly, we can say murabbas, jam and jelly. It is preserved by using sugar, right? सबके घर में शुगर होगा तो हम लोग जब मुरब्बा या जैम बनाते हैं तो जो फ्रूट्स से बनाया जाता है, the fruit is boiled in a sugar so that it can be preserved for a longer time, isn't it? Now the next method is canning and bottling. What is canning? The word suggests canning means can. When the food item is heated in a can to remove the water molecule present in that food item as well as to free from germs is called as canning. So what is canning? Canning क्या होता है? जब food items को हम लोग can में रख के जब heat करेंगे water molecules को remove करने के लिए और germs free करने के लिए, इसको कहते हैं canning. Similarly, what is bottling? So bottling, when food item is heated in a bottle to remove water molecules as well as germs is called as bottling. आप लोगों ने देखा होगा सॉस जो है वो